So today we'll just do some brief chanting and continue on with an overview of what we've been doing or what we've been reading in the last couple of 6 days. And so we'll start with on page 2 from the English chanting books, English Pali chanting books. Yoso Bhagava Arahang Sama Sambuddho, to the Blessed One, the Lord, who fully attained perfect enlightenment. Sawakato Yena Bhagavata Dhammo, to the teaching which he expounded so well. Supatipanno yasa bhagavato sāvaka sangho, and to the Blessed One's disciples who have practiced well. To these, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, we render with offerings our rightful homage. Sadhu no bante bhagava suchira pariniputopi. It is well for us that the Blessed One, having attained liberation, Pājima janata nukampamanasa, still had compassion for later generations. Ime sakare dukata panna karapute patiganhatu. May these simple offerings be accepted. Hamakang degadatang hitaya sukhaya, for our long-lasting benefit and for the happiness it gives us. Arahang Sama Sambuddho Bhagava, the Lord, the perfectly enlightened and blessed one. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. I render homage to the Buddha, the Blessed One. Sawakato Bhagavata Dhammo, the teaching so completely explained by him. Dhammang namasami, I bow to the Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅghō, the Blessed One's disciples who have practiced well. Saṅghang namami, I bow to the Saṅghā. Handamayang Buddhasa Bhagavato Bhagagamana Kadang Kadomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Homage to the Blessed, Noble, and perfectly enlightened one. Homage to the Blessed, Noble, and perfectly enlightened one. Homage to the Blessed, Noble, and perfectly enlightened one. Okay, let's pay respects.
So we can turn to page 44. Page 44. The 5 subjects for frequent recollection. Handamayang abina pachawakana patang patnamase. Jaradamo hijarang anatito. I am of the nature to age. I have no come beyond aging. Payadi damo hi payading anatito. I am of the nature to sicken. I have not gone beyond sickness. Maranatha mohi maranang anatito. I am of the nature to die. I have not gone beyond dying. Sabehi me piyehi mana pehi nana bhawo vina bhawo. All that is mine, beloved and pleasing, will become otherwise, will become separated from me. Kama sakomi, kama dayado, kama yoni, kama bandhu, kama patisadano. Yang kamang karisami, kalayanang wa papakang wa, tasadayado bhavisami. I am the owner of my karma, heir to my karma, born of my karma, related to my karma, abide supported by my karma. Whatever karma I shall do, for good or for ill, all that I will be the heir. Evam amhehi abingam pachawekitapang. Thus we should frequently recollect. Okay. And page 104. 102. The reflection on the 4 requisites. Handamayang tangkanika pachawakana patang patnamase. Pati saṅghāyo niso jivarang pati sewami. Yawa dewa sita sapati kataya. Unha sapati kataya. Tam samaka sawata pasiring sapasampasanang pati kataya. Yawa dewa hiriko pinapati chadanatang. Wisely reflecting, I use the robe only to ward off cold, to ward off heat, to ward off the touch of flies, mosquitoes, wind burning and creeping things, only for the sake of modesty. Pati saṅghāyo niso pinda patang pati sewami. Newa dawaya namadaya namandanaya navibhusanaya. Yawa dewa ima sakaya satitya ya patnaya vihingsu paratiya brahmacharya nugahaya. Iti parananca vedanang patihankami navanca vedanang na upadesami. Yatra cha me bhavisati anavajata cha paso viharo chati. Wisely reflecting, I use ounce food, not for fun, not for pleasure, not for fattening, not for beautification, only for the maintenance and nourishment of this body, for keeping it healthy, for helping with the holy life,
Thinking thus, I will allay hunger without overeating, so that I may continue to live blamelessly and at ease. Patisankhayo sena satnang patisewami. Yawa deva sita sapatikataya. Unha sapatikataya. Tam samaka sawata pasiring sapasampasanang patigataya. Yawa deva utu parisaya vinodanang patisalana ramatang. Wisely reflecting, I use the lodging only to ward off cold, to ward off heat, to ward off the touch of flies, mosquitoes, wind burning and creeping things, only to remove the danger from weather, and for living in seclusion. Pati sankhayo niso kilana pachaya pesacha padikarang patisewami. Yawa deva upananang vayapadikanang vedananang patigataya abhaya paja paramatayati. Wisely reflecting, I use supports for the sick and medicinal requisites, only to ward off painful feelings that have arisen, for the maximum freedom from disease. And we'll finish on with the universal well-being on page page 32. Handamayang metapadanang kadomase. Aham sukito homi, niduko homi, awero homi, abaya bajo homi, anigo homi, suki atanang pariharami, sabe sata sukita hontu, sabe sata awera hontu, sabe sata abaya pacha hontu, sabe sata aniga hontu, sabe sata suki atanang pariharantu, sabe sata sabaduka pamuchantu, sabe sata lada sampatito mawikachantu, sabe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandhu kama patisarana yang kamang karisanti kalayanang wa papakang wa tasadayada pavisanti. May I abide in well-being, in freedom from affliction, in freedom from hostility, in freedom from ill will, in freedom from anxiety, and may I maintain well-being in myself. May everyone abide in well-being, in freedom from hostility, in freedom from ill will, in freedom from anxiety,
and may they maintain well-being in themselves. May all beings be released from all suffering, and may they not be parted from the good fortune they have attained. When they act upon intention, all beings are the owners of their action, and inherit its results. Their future is born from such action, companion to such action, and its results will be their home. All actions with intention, be they skillful or harmful, of such acts, they will be the heads. Okay, so yeah, we've just completed a sort of 6-day retreat, and so I thought it'd be good just to give an overview of what we've been reading from the Stillness Throw-In, translated by Tan Ajahn Jayasaro. Okay, and most of it we pretty much know already, probably heard of before. And so it's very familiar teachings to most of us if we are quite familiar with the practice already. But there's a few key things that stick out when you read teachings from Ajahn Chah, quite particularly like mindfulness, seeing things as the way they are, using your own wisdom and reflection on the phenomena that arises in the mind, whatever it may be, through feelings, perceptions, and mental formations, and so forth. Sorry, hold on. तो हमने अभी कुछ पिछले 6 दिनों से एक थोड़ा सा जो हमारी औपचारिक साधना है उसको बढ़ाने की कोशिश की। अपन सब सुबह शाम के अलावा दोपहर में भी साथ मिल रहे थे, और शाम को जो हम अजान चा की जो जीवनी है उसको, उसमें से कुछ अंश अलग अलग दिनों पे हमने पढ़े। तो आज हम वो जो भी हमने पढ़ा है उसका एक संक्षिप्त में क्या संदेश निकला उसको आज हम अपने आप को याद करवाएंगे, ताकि उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो हम अपने जीवन में उतार सकें। रोज़मर्रा जब हम हॉल से बाहर निकलते हैं और वास्तव में जब जीवन में साधना शुरू होती है तो हम उन धर्म के बिंदुओं को याद रख सकें। तो अजान चा का जो खास एक सिखाने का तरीका था वो बहुत हद तक प्रत्यावेक्षण पे आधारित था। अर्थात जो खंड हैं उनको हमारा जो रोजमर्रा का जो अनुभव है उनको खंडों के माध्यम से देखें, बजाय इसके कि मैं और मेरे के भाव से। And so we read through various aspects of the teachings, mainly in the topic of heartfelt teachings, and there was within the threefold training, they all comprised within the threefold training, which was one of the first things that we read out. And within the threefold training, we're talking about the Sila, Samadhi, Panya, which was discussed and read. तो एक आयाम जो हमने देखा वो
जो साधारण रूप से भगवान की शिक्षा को 3 भागों में बांटा जाता है, शील समाधि पन्या के भागों में। एक तो हमने ये देखा कि अजान चाह उसकी व्याख्या किस तरह से किया करते थे। And within this threefold training of Sila, Samadhi, Panya, there was one thing that came to mind. It's all one package that we should all think is it in one package. You can't have one without the other. Like it's all a loop. When you sort of practicing Sila, you're also practicing Samadhi, keeping the precepts in mind. And likewise, when you're keeping Sila, you have to think and reflect upon, is what my action is doing is wholesome? Is it going to lead? Is it for my benefit or not? So this is a part of wisdom panya aspect. So this is what Longpo Cha was emphasizing, that it's a whole, complete, encompassing training. तो जो 3 आयाम हैं उनको अजान चाह जिस तरह से बताते हैं और जिस तरीके से सूत्रों में आता है, अक्सर शायद हमें गलतफहमी होती है कि ये एक क्रम में आते हैं, कि पहले शील आता है, फिर समाधि, फिर प्रज्ञा। तो हमने पढ़ा कि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जिस हद तक एक आयाम को हम भावित कर पाएंगे, केवल उसी हद तक दूसरा आयाम और उसके आधार पे तीसरा आयाम भावित हो पाएगा, बन पाएगा। तो उदाहरण के तौर पे जिस प्रकार के जिस हद तक हमारे शील पुष्ट होंगे, लगभग मन उसी हद तक स्थिर हो पाएगा। जिस हद तक हमारी प्रज्ञा पुष्ट होगी, बनी हुई होगी, वास्तव में नेचुरली शील उस प्रज्ञा से उत्पन्न होते हैं। जोर जबरदस्ती से हम कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन भगवान की शिक्षा हमें प्रज्ञा की तरफ ले जा रही है, जिससे कि शील एक तरीके से ऑटोमेटिक हो जाए, शील का उल्लंघन करने की क्षमता मन में से धीरे धीरे समाप्त हो जाए, और वो केवल प्रज्ञा से होगा। इसी तरीके से प्रज्ञा और समाधि का पारस्परिक संबंध है। तो संक्षिप्त में हमने ये देखा कि ये तीनों एक साथ चलते हैं, और ये भी हमें याद रखना है कि भाई मैं तीनों चीजों को हम अपने रोजमर्रा की साधना में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। And so when we're talking about the precepts keeping morality, this is the externals he was talking about, and it's regarding all 4 postures, whether one is sitting, lying, walking, or lying down. And it's the sort of coarser aspects that we are trying to make smooth. And he referred to the simile of like a finished pillar or a plank, basically. It's like if you want a finished plank, you first have to cut down the tree and take off the branches and the roots and sort of make it smooth, and then it will be able to be pliable to make it into whatever you sort of want. So that he gave that simile. तो जो शील का आयाम है उसको हम इन तीनों आयामों में से सबसे स्थूल है, एक तरीके से हमारे आचरण से संबंधित है। तो इसकी एक उपमा आई थी, हमने पढ़ी थी कि भाई जब हमें किसी लकड़ी के फट्टे की आवश्यकता पड़ती है, तो लकड़ी का फट्टा वो तैयार होने में सबसे पहले तो जो एक जंगल में कोई पेड़ खड़ा है या सूख गया है, सर्वप्रथम तो उसको हम काटते हैं, उसको नीचे लाते हैं, और फिर उसकी जो बाहरी परत है उसको निकाला जाता है, और धीरे 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 ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों आयामों को भी इस तरीके से समझा जा सकता है कि वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। Yeah, so to like with the mind, we get rid of sort of abandon those coarser sort of actions of body and speech, and make it more refined as time goes on, as we walk through this noble eightfold path. And so that was the teachings of like the threefold training in general that we sort of discussed, that we read. और तो वही फिर से हम दोहरा रहे हैं कि जो 3 आयाम है वो जो बाहरी आचरण का आयाम है शील का, उसको हमने थोड़ा ठीक किया, और उसके माध्यम से जो आगे के समाधि और प्रज्ञा के आयाम हैं उनकी तरफ बढ़े। And then we sort of read through the merit and what it sort of
means to be having acts of generosity. And the first thing, if I remember what we read out, was that it all begins with generosity, as that is sort of letting go of this selfishness nature that we all tend to have within us. And so that is like the beginning of the path. It's the path of renunciation, letting things go that we sort of might find quite agreeable and pleasing to us. So this is a necessary step, and it sort of helps with the sort of next step of sort of meditation and wisdom. We have to have wisdom in the first place to understand that it's of benefit to be letting go of this sort of selfish nature. एक जो प्रमुख बाधा आती है मन को समाहित करने में, प्रज्ञा को पुष्ट करने में, वो जो हमारा नैसर्गिक संग्रह का हमारे में भाव है। मतलब कि भाई किसी भी चीज में मैं अपना स्वार्थ देखता हूं या देखती हूं, इस फलाने फलाने गतिविधि से मेरा क्या लाभ होगा, मैं इससे कैसे अपने आप को लाभान्वित करूं, बेनिफिट करूं। तो जब हमें सूक्ष्म आयामों में बढ़ना है, तो जो दान की बात है या जो अपरिग्रह की बात है, वो उसका काफी एक भूमिका बढ़ जाती है। हम जितना मन को निस्वार्थ की तरफ ले जाने की चेष्टा करते हैं, उसी हद तक मन और सूक्ष्म होता चलता है। उसका जो नेचुरल स्वभाव है चीज़ों को पकड़ के रखने का, संग्रह करने का, चाहे वो भौतिक चीज़ें हों, चाहे वो उपाधियां हों, उनसे थोड़ा 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 दान का जो आयाम है, जो पुण्य की बात भगवान की टीचिंग्स में आती है, वो बातें प्रमुख रूप से संग्रह की भाव को कम करने में हमारी मदद करती हैं। Yeah, so letting go of this sort of selfish nature, the possessiveness, he gave a simile of the popular simile of the big apple. Say that you have a group of friends, or you want to offer something to your friend, the apple, and you have a big and small. And so he was given a simile that it's hard to give the big apple, but it's right in terms of the Dhamma practice, sort of giving away sort of the better things that we sort of might want to hold on to for ourselves. और इसमें जो उदाहरण अजानचा देते हैं वो इस तरह से है कि भाई आपके घर पे अगर अपने मित्र आए हैं और हमारे पास कोई खाने की सामान है, कोई फल है, तो हम कोशिश करें कि जो अच्छा पार्ट है, जो ज्यादा उस एप्पल की, सेब की उदाहरण दे रहे हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा हम दूसरों को दे, बजाय इसके कि अपने लिए रख लें। And then we was reading about right view and in terms of karma, and how it is sort of the first aspect of the Noble Eightfold Path. Longpo really sort of made it home and sort of talked about that, say for example, you can't really how important karma is, and sort of having an understanding. And he gave an example of like people, if people do good, you see many people do good deeds or in the workplace or so, and sometimes they won't get recognized for their sort of good deeds. But Longpo sort of made the point that it's not having a worldly outcome of good deeds that we're trying to think about. It's actually the action in itself. When we actually do that good deed, right there in that moment, we feel good about it. So he made that point. इसके बाद एक और जो बात हमने पढ़ी वो सम्यक दृष्टि की बात पढ़ी, और सम्यक दृष्टि जो कि अष्टांगिक मार्ग का पहला पड़ाव है, उस पहले पड़ाव का पहला पड़ाव जो है वो जो लोकीय आयाम है सम्मा दृष्टि का, वो कर्म सिद्धांत है। तो हमने पढ़ा कि अजानचा बताया करते थे कि भाई अक्सर कर्म को समझने में हम थोड़ी सी गलती इस तरह से करते हैं कि उदाहरण के तौर पे किसी ऑफिस में, दफ्तर में हम कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन संभवतः तुरंत हमारी परिस्थितियां उसके अनुकूल सकारात्मक, हेल्पफुल नहीं हो जाती हैं। तो कभी कभी जब हमारे अच्छे चेतना, अच्छे काम में और उसके फल में जब कुछ देर होती है, तो
थोड़ा थोड़ा मन में कर्म सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। तो अजानचा बताते हैं, हमने पढ़ा कि भाई हमें उसको एक सौदे की तरह नहीं देखना है, एक आदान प्रदान की तरह नहीं देखना है कि भाई मैं कुछ अच्छा करूंगा तो तुरंत मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे तो वास्तव में जैसे ही हम कुछ अच्छा करते हैं, तुरंत अगर हम ध्यान से सेंसिटिवली मन को परखेंगे तो हमें दिखेगा, पता चलेगा कि वास्तव में तुरंत ही मन में एक हल्का सा प्रमोद, एक अच्छी फीलिंग जागती है, जैसे ही कोई सकारात्मक चेतना हम मन में बनाते हैं। और चेतना ही कर्म है, अर्थात अच्छे कर्म की परिभाषा है, मैंने कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक चेतना मन में जगाई और संभवतः उसको उतारा, और अगर मैं देखूंगा ध्यान से तो मुझे दिख जाएगा मन में कि हाँ इस वजह से मेरे को मन में एक अच्छी फीलिंग आई। Yeah, and also like if one sort of expects sort of some gain from something, say like you give some sort of offering, for example, expecting something from it, basically, then that's not the Dhamma he was saying, and it's where sort of you'll feel suffering. Basically, it's giving without the expectation, just for the feeling that the feeling of it feels goodness, and it's a wholesome act in itself. And if you're looking at other people, sort of the people that are you would think that are not so wholesome or not following Dhamma, they cheat and sort of lie to get to way to the top. It's missing the point if we're looking at those people and they're still getting the results, because you don't know what their sort of mind state is at that moment, to get it. And of course, on the wider scale of the karma, it will come back to them. So we have to really sort of look at ourselves and our own actions. That's what Nompo was saying. दो और बातें कर्म सिद्धांत और दान के सिलसिले में अजानचा आगाह करते हैं, और वो अपने उस ऑडियंस को किया करते थे। ये जो जीवनी हमने पढ़ी, ये उनके जीवन में अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उस पर आधारित है। मतलब जो सारी बातें हम आज याद कर रहे हैं वो वास्तव में घटी थी जब अजानचा या तो अपनी मोनेस्ट्री में थे या किन्हीं लोगों से मिल रहे थे। तो जो दो एस्पेक्ट्स और वो बताते हैं वो ये है, जो हमने थोड़ी अभी पहले भी इसकी बात की, कि भाई हमारे मन में एक व्यवहार का एक एक हाथ लेना दूसरे हाथ देना, ऐसा भाव हमें कुशलता की तरफ नहीं ले जाता। तो अगर मेरे मन में कुछ अच्छा करने के पीछे चेतना ये है कि भाई मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, ये एक इसमें अभी भी सेल्फिशनेस या अपना खुद का लाभ का जो भाव है वो इसमें निहित है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, चाहे वो दान की बात हो चाहे अन्य अच्छे कर्मों की बात हो, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना उचित है, वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। तो एक तो ये बात बताई। दूसरी, फिर से वही बात कि अक्सर हम ऐसा देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि भाई कोई अन्य व्यक्ति जीवन में या ऑफिस में या कहीं भी उल्टे सीधे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई उसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो तो खूब लाभ प्राप्त कर रहा है, या इस प्रकार से जो भी जीवन में उसके साथ सकारात्मक परिस्थितियां घट रही हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना है कि कर्म सिद्धांत जो है वो 1 to 1 ऑपरेट नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैंने कुछ नकारात्मक किया तुरंत मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ना ही इसका विपरीत है कि कुछ मैंने अच्छा किया तो तुरंत मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। इसके पीछे के जो कारणों का जो संकलन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो फर्ज है, वो केवल इतना है कि हम सकारात्मक चेतनाएं मन में जगाएं और उसके आधार पे अपने वाणी और शारीरिक एक्शंस करें, आचरण करें। हमें इस बात में फंसने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने अच्छा किया तो कुछ अच्छा हो जाए, वो फलाना फलाना तो इतना उल्टा सीधा काम कर रहा है उसके साथ तो अच्छा हो रहा है। ये सारे व्यर्थ के प्रपंच हैं, मन के प्रपंच हैं। तो इनसे हम दान के दायरे में और कर्म के दायरे में सतर्क रहें और बच के रहें। And so, coming back to ourselves, it's like if you're trying to help somebody who's like trying to give up alcohol, you can't make that person sort of force that person to give up alcohol. It's only through himself, through reflecting sort of the
undesirable sort of consequences of it that one can give up. So this is the basis of right view, basically. And it said, it started actually, this whole sort of reading of the right view, it started off as there's not one Dhamma that I see that is a cause for the arising of wholesome Dhammas than right view that has not yet arisen, and for the maintenance for already that wholesome Dhammas that have already risen, that's right view. This is like the Dhammapada, I think, of the Buddha's first. तो फिर से हम उसी बात पे आ गए कि सम्यक दृष्टि जो है वो मार्ग की एक तरीके से शुरुआत भी है, मार्ग का मकसद भी मन में सम्यक दृष्टि को भावित करना है, और मार्ग का अंत भी सम्यक दृष्टि पूरी तरीके से हमारा पूरा जीवन को देखने का, जीने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, रवैया है, वो पूरी तरीके से सम्यक दृष्टि के अनुकूल हो जाए। तो इस धम्मपद में भी ये इस तरह से गाथाएं आती हैं, और हमने पढ़ा कि अजान चाह भी बहुत बल देते थे इस बात पे कि भैया जो भी करो ये ध्यान रखो कि क्या इससे मेरी दृष्टि सम्यक हो रही है। और सम्यक दृष्टि के कई अलग अलग आयाम बताए। एक आयाम तो कर्म सिद्धांत का बताया जो हमने भी डिस्कस किया, इसके अलावा कई सारे आयाम हैं जो अजान चाह की जीवनी में भी आते हैं और इसके अलावा सुत्तों में भी आते हैं। And so there was also a section of opposing wrong views or holding sort of wrong practices, right, wrong views. And one of the things that was mentioned is that like asking for things and praying basically to like deities and sort of spirits basically. And so again, it's just like coming back to ourselves, that you could be asking for who knows how long and nothing can really happen. So this is obviously a really sort of fundamental Buddhist practice to bring it into ourselves basically. उस समय के जो थाई सोसाइटी थी या जहाँ अजान चाह रहा करते थे, उबॉन जो राज्य है उसमें रहा करते थे, और ये 1950, 60, 70 के दशक की बात हो रही है। उस समय उस सोसाइटी में कई सारे मिथ्या दृष्टियां थीं, अंधविश्वास थे। तो हमने ये भी पढ़ा कि कैसे अजान चाह जो उनकी ऑडियंस थी, जो उनके अनुयायी थे, उनको प्रोत्साहित करते थे कि अपने जीवन की जो दिशा है जो वो बाहरी अलौकिक शक्तियों पे उसको ना टिकाएं, बल्कि अपने खुद की समझ पे, अपने खुद के उद्यम पे अपने जीवन की दिशा को टिकाएं। तो क्योंकि ऐसी बहुत सारी धारणा उस समय थी, तो अजान चाह बहुत जोर से इस बात पे बल दिया करते थे कि भैया इन बाहरी चीज़ों में मत फंसो, इन ऐसी जो मिथ्या दृष्टि वाली बातें हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो किसी अलौकिक शक्ति से मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इन सब चीज़ों में मत फंसो, बल्कि अपने खुद के मन को जितना हम शुद्ध कर पाएंगे और उसके आधार पे जितने हमारी चेतना जितनी ठीक होगी, हमारा आचरण जितना ठीक होगा, उतना ही हमारा जीवन सकारात्मक होगा और उतना ही हमारी परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। And so we went on to read about techniques and sort of the hindrances. And as we sort of already familiar that Ajahn Chah doesn't really teach a familiar technique. And so he was more of a generally whatever helps in the path of letting go and sort of building sort of mindfulness that is useful, and whatever is compatible basically. And like whatever it is, you sort of have an affinity with it basically and a familiarity. But he does emphasize like the breath, he would say. एक और चीज जो हमने पढ़ी कि अजान चाह किसी एक पद्धति, किसी एक टेक्निक पे बल नहीं दिया करते थे। उनका फोकस इस बात पे था कि भाई अपनी साधना में औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप दोनों आयामों में अपनी साधना में वही करें जो हमारी मदद करता है हमारी प्रमुख जो तृष्णाएं हैं उनको छोड़ने में, जो इन्होंने अभी लेटिंग गो बताया।
प्रहान करने में अपनी तृष्णाओं का। तो उसके लिए जो भी करना हो हम उसको करें। हम इस तरह से अपने आप को बांध ना दें कि बस यही एक पद्धति है, यही एक टेक्निक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज हमारे मन को हल्का करती है, तृष्णाएं कम करती है, वो हमारे लिए उचित है। साथ ही साथ जो समाधि का आयाम है उस पे उन्होंने जो सांस के प्रति सजगता है उसको काफी बल दिया था, मन को समाहित करने के लिए। But he himself used the breath. So this is what he emphasized. And he would say, in terms of dealing with the sort of hindrances, it's this meditation objects what helps keep the mind in place when sort of like the hindrances arises. For example, like the sensual pleasures, thoughts of sensual pleasures and ill will. So if one way of to deal with it is just going back to the hindrances, going back to the your meditation object, like the breath, for example. So he gave that as an example as a way to deal with hindrances. तो औपचारिक साधना में अलग अलग निवरण उठते हैं, हिंड्रेंसेस उठती हैं, दिक्कतें आती हैं, और अलग अलग निवरण के लिए, अलग अलग हिंड्रेंस के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके बताए गए हैं। अजानचा खुद अपने जीवन में, अपनी साधना में जो सांस की सजगता है उसको अत्यधिक इस्तेमाल किया करते थे। और साथ ही साथ जो उनके सामने जो भी स्टूडेंट होता था, जो भी व्यक्ति होता था, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसको औपचारिक साधना के जो कर्म स्थान है वो बताया करते थे। And dealing with sensual pleasures, he brought up, of course, the traditional textbook uh, similes of like not simile, but methods of dealing with it. So, for example, like corpses, having a corpse in your mind, picturing a corpse in your mind, and sort of the decomposing of the body and bodily parts, and seeing like the head, nail, body hair, head of nails, teeth, and so forth. So like breaking these down into sort of their components. So this is the textbook's way to do it. And he emphasized like that there's many sort of ways that it can deal with the sensual pleasures. तो जैसे राग का जो निवरण है या वासना है, तो सामान्य रूप से जैसे शास्त्रों में आता है, अजानचा भी उसी तरीके से बताया करते थे कि उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग शरीर के अंगों का विवेचन है, जो शव के बारे में विवेचन है, उसकी विजुअलाइजेशन है, या उस समय पे जैसे हुआ करते थे, जो स्मशान होते थे वहां जाके एक मृत शरीर पे चिंतन करना, विवेचन करना, प्रत्यावेक्षण करना। तो इस तरीके के जो सामान्य चीजें सुत्तों में आती हैं, अजानचा भी उसी तरीके से खास करके राग के लिए और वासना के लिए वही रास्ते बताया करते थे। And in regards of like ill will, he was merely mentioning using the love and kindness, living kindness technique, spreading metta to all beings and oneself, and also that wisely reflecting like that we're like sort of in the same boat basically. Everyone's suffering, and like the reason why sort of we have aversion, we don't really understand basically. Maybe that person, is like having a bad day, they have their own problems, and you don't really know sort of their mental state. So it's really just coming back again and seeing that it's all impermanent and it's not unsatisfactory into the ill will. So it's more of a wisdom aspect of the ill will. द्वेष का जो निवरण होता है उस पे अजानचा इस तरह से सिखाया करते थे कि जो मैत्री का भाव है वो वास्तव में क्या है। मैत्री का भाव ये है कि जैसी मेरी स्थिति है वैसी ही दूसरे की स्थिति भी है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझे ठीक नहीं लगता या मुझे उससे गुस्सा आता है, तो मुझे विवेचन ऐसे करना है, अभी इन्होंने बताया कि वो सारी ही चीजें प्रज्ञा के रास्ते से बताते थे। तो इसमें विवेचन ऐसे करना है कि भाई मैं भी तो कितने बार अपने मन में जैसा भाव उठ रहा है उसके वजह से कई ऐसी चीजें करता हूँ, बोलता हूँ जो कि संभवतः दूसरों को अच्छी नहीं लगती हैं।
तो जिस तरह से मैं अपने आदतों के, अपने संस्कारों के गुलाम हूं, उसी तरीके से वो व्यक्ति भी है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसके प्रति द्वेष जगाने का अर्थ यह है कि मुझे अभी बात समझ नहीं आई है कि ये सारा जो खंडों का सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। मैं उसको व्यक्तिगत ले रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि वो एक खराब व्यक्ति है जो जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति उतना ही अपने संस्कारों का शिकार है जितना कि मैं हूं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब हम इस तरह के से विवेचन करते हैं, प्रत्यावेक्षण करते हैं, तो स्वतः ही मन में द्वेष जो है वो कुछ हद तक कम होने लगता है। उसको हमें जोर जबरदस्ती से कम नहीं करना पड़ता। And so with like restlessness, ill will, and like doubt, he was bringing home the point that having sort of these hindrances in the mind, they were always there basically, and it's only through meditation that we actually see that they're there. They're sort of like he brought up like the microscope. You can see everything and investigate it. And the things that they are basically, they've always been there. It's just that they've gone unnoticed. But as soon as we sit down to see, then we'll start seeing the hindrances. So they're always latent within us. And he brought up the point that it's not just when they're there when we're sitting with our eyes closed. It's there when we're with our eyes open in all four postures. फिर एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भाव होता है कि भाई मैंने औपचारिक साधना शुरू की या औपचारिक साधना को बढ़ाया, तो मन में जो अलग अलग निवरण उठते हैं वो बढ़ गए। मन मेरा ज्यादा परेशान होने लग गया। कभी कभी ऐसा लगता है। अजानचा बताते हैं कि वास्तव में वो निवरण हमेशा ही मौजूद थे। केवल जब हम शांति से बैठते हैं और मन को परखना शुरू करते हैं, तो हमें दिखने लगते हैं वो चीजें जो कि पहले से ही मौजूद थी। केवल फर्क यह है कि पहले हम उनको देख नहीं रहे थे, अब हम बैठ के शांति से देख रहे हैं तो हमें वो दिखने लग रही हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये निवरण केवल औपचारिक साधना में के दौरान ही आते हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में पूरे जीवन में ये प्रकट होते रहते हैं। केवल इतनी सी बात है कि हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम इतने प्रमाद में रहते हैं, इतने खोए रहते हैं। जो भी इंद्रियों के विषय आ रहे हैं हमारे, उसमें हम इतने खोए रहते हैं कि हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा मानना गलत है कि सडनली ये बढ़ गए हैं, या ये तो बस सिर्फ जब मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ तभी आते हैं। ऐसा नहीं है। And so with all these hindrances, he was saying that we don't want to be averse to them, and the key component really, and that we have to be repetitive continuously, like practicing and dealing with these hindrances in skillful ways, using sati sampajanya as the main ingredient. और उन्होंने लिस्ट भी बताई बाकी निवरणों की। हमने राग की और द्वेष की तो बात कर ही ली, साथ में उत्सुकता का निवरण जो है, शंका का निवरण जो है। तो इस तरह से हमें जब ये निवरण आते हैं, जब ये दिक्कतें आती हैं जीवन में भी और औपचारिक साधना में भी, हमें इससे हताश होने के बजाय अपने आप में निरंतरता का भाव जगाना है। मतलब कुछ आया, उसको हमने कोशिश की उसका सामना करने की। संभवतः कुछ हद तक हो पाया, कुछ हद तक नहीं हो पाया। फिर दोबारा से उठ के आएगा, फिर दोबारा से उठ के आएगा, फिर दोबारा से उठ के आएगा। तो ये भाव ना रहे कि बस अब ये मैंने इसको निपटा दिया, ये खत्म हो गया, अभी कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। ये जो रास्ता है ये धैर्य का रास्ता है, लंबा रास्ता है। तो हम तैयार रहें कि लगातार ये निवरण आते रहेंगे और हमें धैर्य से और साथ ही साथ अत्यंत समझदारी से, प्रज्ञा से उनको लगातार मीट करना है, बार बार उनका सामना करना है, रचनात्मक तरीकों से उनका सामना करना है। केवल एक फॉर्मूला नहीं लगा देना है। जैसा स्वभाव है जो मन में निवरण उठ रहा है, उसके अनुसार हम उसको हैंडल करने की कोशिश करें और निरंतरता से वो कोशिश बनाए रखें। And one thing that just comes to my mind as I remember, he said, although it's good to have like different sort of skillful means to deal with it,
But he also mentioned that that it's good to try to stick to one sort of meditation object, for example, like the breath, at least for a certain while, you know, and to keep changing around it can maybe not so helpful. Just फिर औपचारिक साधना में ऐसा भी अजानचा एक प्रसंग में बताते हैं, जो भी व्यक्ति सामने रहा होगा उसको, कि कोई भी हम जब औपचारिक साधना में कुछ भी हम कोई तरीका हम अपना रहे हैं, तो पर्याप्त समय दें उस तरीके को, जो भी हम कर रहे हैं उस तरीके को स्थिर होने का। हम अगर बार बार चीज़ें कर्म स्थान बदलते रहेंगे, तो कोई भी कर्म स्थान में हम परिपक्व नहीं हो पाएंगे, हम उसमें स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक उन्होंने औपचारिक साधना के लिए आयाम बताया कि जो भी अलग अलग तरीके हैं, कर्म स्थान हैं, उनको हम एडिक्वेट समय दें, उनमें हम लगातार काम करें कुछ समय, जब तक कि वो हमारे मन में स्थिर नहीं हो जाते। And like with physical pain, we've been sitting through it's like 3 hours in the afternoons, or sitting and walking, for example. So of course, pain is inevitable. And what he said with this, you know, he said that if you actually can sit through it, then you know you see that it changes basically. And if you're able to like come on the other side, basically, then there's a great sort of sense of rapture and sort of joy that comes to mind, knowing that you can sort of sit through the pain, seeing that it's changeful. And so that what sort of came to my mind. And एक और आयाम हमने पढ़ा कि अजानचा अक्सर ऐसे भी प्रोत्साहित करते थे कि जब हम लंबे समय तक साधना कर रहे हैं, जैसे कि हम दोपहर में 3 घंटे बैठने के और चलने के शारीरिक परिस्थितियां अपना रहे थे, तब कई बार शरीर में अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो अजानचा ये भी प्रोत्साहित किया करते थे कि भाई हम अगर समझदारी से, धैर्य से उनका सामना कर सकें, तो जो अनित्यता का भाव है वो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। हमें दिखेगा कि वो जो शारीरिक तकलीफ है वो बदलती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, कई बार चली जाती है, कई बार हो सकता है बढ़ भी जाए। लेकिन जब हम धैर्य से उसका सामना करते हैं, बजाय प्रतिक्रियात्मक तरीके से, मतलब जैसे ही कुछ दिक्कत आई उसको हमने तुरंत उसको बदलने की कोशिश कर दी, इस भाव से नहीं, पर अनित्यता को समझने के भाव से जब हम शारीरिक दिक्कत का सामना करते हैं, और फिर जब वो वास्तव में बदलती है, हम उसको देख पाते हैं बदलते हुए, तो मन में बहुत प्रमोद और बहुत सुख शांति जागती है। ये भी एक आयाम अक्सर अजानचा किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में बताया करते थे। But also, of course, if he was saying if you can't really sit through the pain, you know, then of course it's too much, then you can just move basically, but you don't move with the aversion and out of fear, basically, and anxiety. That was one thing that he was mentioning. You move, just when it's like, you know, enough, like it's good enough, you could say, like. And so, using wise reflection, just like the hindrances, when you sit for long periods, you can actually examine sort of these sort of painful feelings, basically. और जब शरीर में दिक्कत हो रही है और हम अपना जो अवस्था है, आसन है, उसको बदलते हैं, वो जो बदलाव है उसके पीछे की चेतना द्वेष के बजाय शरीर के प्रति मैत्री का भाव हो, कि अच्छा जी, ये शरीर मैं और मेरा तो है नहीं, इसके अपने कुछ कारण, कुछ हेतु, कुछ परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार अभी वेदना खंड उत्पन्न हो रहा है, अप्रिय वेदना उत्पन्न हो रही है। तो कुछ समय तक, जब तक संभव है, उसको हमने धैर्य से देखा, और फिर ये दिखने लगा कि अभी ये बना हुआ है। तो क्योंकि वो चीज अपनी खुद की नहीं है, वो शरीर अपना नहीं है, ये अप्रिय वेदना हमने बुलाई नहीं है, वो स्वतः ही कारणों से, परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है। तो उसके प्रति प्रज्ञा का जो भाव है वो मैत्री का है, कि भाई इस भौतिक रूप का इतनी क्षमता है, अब इसको हम हल्का सा बदलते हैं।
बजाय इसके कि उसके प्रति हमें द्वेष जागे और द्वेष के कारण हम प्रतिक्रिया से बदलें। तो जो बाहरी एक्शन रहा वो तो वही रहा, पर चेतना उसकी दोनों केस में अलग थी। तो ये भी एक शरीर में जो दिक्कत होती है उसके सिलसिले में अजान चाह का ये एक बहुत दिलचस्प रवैया हमें बताया। And so we finished sort of the readings like with Beyond the Monkey Mind, that monkey mind that we're all sort of familiar with. And he was saying that once you know that you're on the right path, basically, when you start to see things as within the three characteristics, that is like unsatisfactoriness and not self, basically, in all sort of things that arise in our sort of daily experiences, whether it's seeing forms through the eyes and hearing sounds and odors and tastes, basically. You see all through the same lens as the three characteristics. And when this happens, a sense of, he was saying, it's like nibbida arises, basically. Sort of, you lose sort of your interest, disenchantment, basically. And so this is like sort of the ultimate, like the end, basically, when you know you're on the right path. And sort of the personality view sort of fades away, basically. So this is something that we can all sort of aspire to. फिर अंत में हम ये कैसे भांपें कि जो भी हम ये सब कर रहे हैं ये हमें मुक्ति की तरफ ले जा रहा है। तो उसका एक सरल जांचने का तरीका ये है कि जो जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, घटनाएं घटती हैं, जिन व्यक्तियों से हम मिलते हैं, जिस हद तक इन अलग अलग परिस्थितियों, इन अलग अलग व्यक्तियों को हम तीन लक्षणों के दायरे में, तीन लक्षणों के माध्यम से देख सकते हैं, उस हद तक हम कह सकते हैं कि हमारी साधना सफल हो रही है। तो क्या है तीन लक्षण? कि कोई भी परिस्थिति आई तो मन में ऐसा भाव जगे कि भाई ये परिस्थिति अभी अनिश्चित है। तो जो अजान है वो अनित्यता का जो अप्लाइड आयाम है उसको अनिश्चितता बताया करते थे, अनसर्टेनिटी। ये मेरा मन किसी तरह से किसी चीज के बारे में मुझे बता रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये अनिश्चितता का आयाम। दूसरा अनात्म का जो आयाम है उसको वो लैक ऑफ कंट्रोल की तरह बताया करते थे कि सच ऐसी ऐसी परिस्थिति आई, ये परिस्थिति स्वतः उठी है, इस पे कोई मेरा वश नहीं है। और तीसरा लक्षण अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस का, असंतोष का, कि कोई भी स्थिति है, कोई भी व्यक्ति है, वो मुझे लंबे समय तक खुशी नहीं दे पाने वाला है। तो किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से मैं इतना ज्यादा ना चिपकूं, क्योंकि उसका मूल स्वभाव जो है वो असंतोष का ही बना रहने वाला है। तो जितना जितना हम जीवन की, रोजमर्रा की जो हमारे अनुभव हैं उनको इन तीन लक्षणों के माध्यम से देखने लगते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छा मापदंड है ये देखने का कि हमारी साधना में हम कितने वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। तो अंत में हमने ये भी पढ़ा जो हम रीडिंग कर रहे थे। And one last point is he made the point of not making a mistake, that disenchantment is having an aversion, is not being averse to things. It's very important, a distinction to make. He was emphasizing that it's just through and the seeing that the impermanence of things and sort of interest and sort of wanting to this, and that basically sort of fades away, basically. And he sort of mentioned that like you're entering the stream, basically, and so it's a positive and wholesome sort of mind state. It's this disenchantment, this nibbida, which can often be sort of seen as like not adverse to things, basically. So he just made that point. It's just seeing that these things are anicca, and so the mind sort of cools from desire. तो एक लक्षण जो सामने आता है जब ये जो तीनों लक्षण में हम पुष्ट होने लगते हैं, वो निर्वेद का भाव है। निर्वेद का भाव मतलब किसी भी बाहरी व्यक्ति, स्थिति में हमारी अत्यधिक
दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की ये है कि हम निर्वेद को द्वेष से या विवशता से ना मिक्सअप कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम कह रहे हैं ये भी ठीक नहीं है, ये भी छोड़ दो, ये भी बेकार है, ये द्वेष है। या विवशता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब चलो ऐसे ही है, चलने दो, देख लेंगे, ये विवशता है। निर्वेद वो नहीं है। निर्वेद में जो मन की मन का जो एहसास होता है वो बहुत ही सहजता का एहसास होता है निर्वेद भाव में। तो जो बाहरी परिस्थितियां हैं उनके प्रति झुकाव कम होने लगता है, और जो जो तृष्णा है वो हल्की पड़ जाती है प्रज्ञा के आधार पे, इन तीन लक्षणों के आधार पे, ना कि द्वेष के आधार पे, ना कि विवशता के आधार पे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। कई बार हम ऐसे भ्रम में पड़ जाते, कह रहे मेरे मन में तो निर्वेद जाग रहा है, जबकि वास्तव में हम परिस्थितियों से पलायन कर रहे हैं, परिस्थितियों से हमें दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो वास्तविक निर्वेद नहीं है। So one can see that with all these teachings that we've received, um, it's all about like our own efforts that we need to be putting forth on a constant basis, like day in, day out, by body, speech, and mind, making our actions sort of in line with Dhamma. And so it's a gradual training, and I encourage all of us to to keep on going in the difficult times when we don't feel like we have a lack of energy or so. We can still sort of reflect upon this and sort of use it in a skillful means and sort of establish ourselves in the Dhamma, become make the heart like Dhamma basically, and we can reward great what rewards can come from that in our daily lives in all aspects. So I'll leave this there and we can sit for the remaining half an hour or so. तो अंत में संक्षिप्त में हमें ज्ञानवारो जी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई हमने इस हफ्ते अजानचा की अलग अलग बातें पढ़ी, सुनी, उस पे चिंतन मनन किया। तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम लगातार कोशिश करें इन प्रज्ञा के आयामों को अपने मन में उतारने का। हम कोशिश करें लगातार सुबह दोपहर शाम के हम इन टीचिंग्स के माध्यम से अपनी औपचारिक साधना भी करें। इन टीचिंग्स के माध्यम से औपचारिक साधना के बाहर की जो साधना है, रोजमर्रा के जीवन की साधना है, उसको भी इन टीचिंग्स के माध्यम से जीने की कोशिश करें। जो निरंतरता है उस पर उन्होंने बल दिया। निरंतरता का मतलब ये है कि ये सारी बातें हम केवल इस हॉल में ना याद रखें, बल्कि जब नॉर्मल जीवन चल रहा है तभी भी उसको याद रखने की कोशिश करें। कोशिश करें कि उन सिद्धांतों के आधार पे हम रोजमर्रा की परिस्थितियों को मीट करें। उन 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 उनमें जीवन व्यापन का जो रवैया है वो ये प्रज्ञा के आयाम, अनित्यता का आयाम, अनात्म का आयाम, असंतोष का आयाम, इनके माध्यम से रोजमर्रा का जीवन जिए। तो इसी प्रोत्साहन के साथ वो पूर्ण विराम देते हैं और सबको शुभकामनाएं कि इस तरह से धर्म जीवन में उतरने लगे और हमारे मन में, हमारे अंदर इतनी एनर्जी, इतना वीर्य बना रहे कि हम इस मार्ग पे चल सकें। तो बाकी समय हम अब शांत रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, और बाहर वॉकिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghang Namami. तीन प्रणाम भिक्षु संघ को अर्पित करते हैं। प्रथम प्रणाम द्वितीय तृतीय प्रणाम Okay, sadhu, sadhu, Adamodana. And I see that we have some new guests, Swakate. Okay. तो शायद सबको पता ही है कि 1 नवंबर को अ, अपने मोनेस्ट्री का कटिंग समारोह आयोजित होगा। और अभी तक जितनी हमें खबर मिली है, जो लुम्पुरलियम और जो ग्रुप थाईलैंड से है, वो 29 अक्टूबर को पहुंचेंगे यहाँ चंडीगढ़ होते हुए, और 3 तारीख तक हमारे साथ रहेंगे, और उनका वापसी भी चंडीगढ़ से ही है। तो रजिस्ट्रेशन अनाउंस कर दी गई हैं। आप में से जो लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए संभव है, ज़रूर आइए, रजिस्टर कर सकते हैं आप। रहने की सुविधा इस बार यहीं मोनेस्ट्री में ही करेंगे। बहुत आरामदायक नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो फीडबैक था वो ये था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मोनेस्ट्री का परिसर है उसी में उस दौरान रहना चाहते हैं। और उससे पहले भी कुछ वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट किया गया है, लगभग 26 अक्टूबर से आने के लिए, जो लोग आ सकते हैं सेटअप के लिए, तैयारियां करने के लिए। और किसी भी ऐसे बड़े समारोह के बाद काफ़ी कुछ संभालने का काम भी रहता है। तो ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि भाई अगर आप कुछ लोग 5 तारीख तक रुक सकें, सारा ग्रुप चला जाए उसके बाद, तो उसमें भी मदद होगी। तो इन्हीं रिक्वेस्ट्स को दोहराते हुए और फिर से सबको बहुत वार्मली वेलकम करते हुए, उस दौरान जो लोग आ सकें प्लीज़ आइए। इस दौरान वर्षावास में भी आ सकते हैं। अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीने और बचे हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे माहौल बहुत अनुकूल है, उचित है। तो जो लोग समय निकाल सकते हैं व्यक्तिगत रूप से आने के लिए, स्वागत है। और इंटरनेट पे समय समय पे अनाउंसमेंट्स होते रहेंगे, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ओके। थैंक यू बंते जी, थैंक यू एवरीवन।